So welcome students to this class, which is in the series of lectures upon the computer, malicious softwares and security. In today's class, before I come to today's class, I want to quickly brush up what was taught in the class yesterday and day before yesterday. We got to know that a malicious software is otherwise called as a malware. That we come to know what is the feature of confidentiality, integrity, what is cybercrime, what is the concept of availability. Then we got to know that how the computer attacks are designed, what are internal attacks, what are external attack, what is an active attack. We learned about some different types of malware. For example, we learned about viruses. What are viruses, how they affect the computer, how do they look in the computer, how they get attached and how they get transferred. We came to know about that. We learned about the major virus attacks that has been designed in history in recent times. We also learned about the types of antivirus kits that are available and the types of viruses also, like boot sector, multipartite, file, fat, etc. File infecting, fat virus, etc. We learned about worms, how worms are different from viruses. Worms remain as separate entities and they moreover get transferred by communication media. Remaining, they do not associate themselves with the program. We learned about Trojan horses, केमिति Trojan horses किस तरह वो loopholes को खोल देते हैं, security flaws को खोलते हैं, and that allows certain type of hacking possible. We learned also how this backdoor Trojans are being transferred from one place to another. Last class also I told you regarding the logic bombs, the famous one with Michelangelo, logic bomb, which is a program that we came to know that this is a program to wait for a certain time by the programmer and at the right time it starts to do that. We learned what is adware, the advertisement wares which keep on running with every application. We learned what is a rootkit and how rootkit can damage the entire system if there are rootkits accessed fraudulently. We came to know about internet frauds, the different types of internet fraud like phishing, denial of service attack, otherwise called as DOS attacks, spam mails, spoof mails. We came to know about farming. Okay, what is it? It's a kind of domain name hacking, eavesdropping, masquerading, salami technique. And I told you yesterday how by salami technique, many hackers are able to, many phishers are able to raise a lot of amount of money. We came to know about spam emails. So this much I have covered. Those who had missed the session, you can watch the video yesterday so that you can get to know. In today's class, whatever I'm going to discuss, you pay attention. Wherever you get any doubt, you can use the chat box to ask it. Today, we are going to learn about some other features of computer security, beginning with hacker. What is hacker? The word is hacking. Hacking means it is an attempt. ये कोशिश है. In this attempt, the person or the programmer, he does not have authority to access that computer resource, लेकिन वो वहां पे घुसने की कोशिश करता है. So this person is a skilled man, he's a skilled engineer who takes a lot of time trying to breach the computer security. This computer security may be hardware security, it may be a software security, ब्राउजर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, कहीं पे भी जो सिक्योर फीचर है जो कि कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड यूजर्स से रोकते हैं, उसको वो ब्रीच करने की कोशिश करते हैं. He is a specialist actually who tries to identify the weakness of a software and then he exploits it. Now, cracker. Who's a cracker? Cracker is a person who breaks into the computer system, generally on a network, who bypasses the password. For example, if you are running Windows and Windows has a license, you have some password through which you are accessing Windows. A cracker will try to bypass this breach. Breach means violating. Breach sabdar mane hoche violate, bypass kariba, creating a kind of exploiting point of exploitation. So what they do, they bypass the password, they bypass the licenses and get into the program intentionally. So the difference between hacker and cracker,
that the hacker moreover tries to exploit the security loopholes or identify the breaches, and the cracker one goes one step forward, that he uses always the network to bypass the authenticity. Both of them are quite similar. Most of the times a hacker could be crackers also. Crackers can easily be identified because their actions are malicious, but hackers always do not have malicious reason. क्रैकर का काम है सिक्योरिटी लूपहोल को फाइंड करके वहां से डेटा को चोरी करना, लेकिन हैकर, देयर कुड बी गुड हैकर्स आल्सो. So now, why do you need good hackers? That we will try to understand. These hackers come with different names. Sometimes we call them to be freaker, sometimes cracker, sometimes we call them trashers. Name could be anything, but ultimately, these are the people who are entering into the computer system. They attack network systems, they attack individual PCs. Ultimately, they try to find out where is the flaw in the operating system. Now, according to the nature, hackers could be of different types. Black hat hacker. Who is a black hat hacker? Who is doing it illegally? वो किसी के सिस्टम में घुसते हैं, कोई नेटवर्क में घुसते हैं और वहां से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको गेन करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, जो कि जरूरी है, एंड दे डोंट हैव ऑथोरिटी फॉर दैट. सो दिस इज इलीगल हैकर. ग्रे हैट हैकर, इनका काम है सिक्योरिटी वीकनेस को ब्रीच करना, ओके, और अ प्रोडक्ट टू हाईलाइट एग्जिस्टिंग वीकनेस टू देयर ओनर्स. तो ग्रे हैट हैकर्स आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. वो क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं और उनके एम्प्लॉयर को बता देते हैं कि देखिए ये जो प्रोग्राम बना है इसमें ये डिफेक्ट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक बैंकिंग पेमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो बैंकिंग पेमेंट सिस्टम में द डेटा वट एवर इज गोइंग टू कम, वट एवर इज गोइंग टू आउट, दैट मस्ट बी सिक्योर, वरना उस डेटा को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है. सो फॉर दैट यू नीड अ ग्रे हैट हैकर, जो कि चेक करेगा, वो आप ही के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा टू नो द फॉल्ट. अ व्हाइट हैट हैकर इज नॉट इनसाइड द कंपनी, ही इज हायर्ड. लेकिन कभी कभार जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं किसी कॉर्पोरेट में, कंपनी में, उनकी रिसोर्सेस उतनी ज्यादा नहीं रहती, मतलब दे आर नॉट दैट कॉम्पिटेंट टू hack and find the loophole of every system. इसीलिए व्हाइट हैट हैकर्स को हायर किया जाता है. Now, there is a very much propagandized company right now, White Hat Junior. It is trying to create coders right now. So a white hat hacker is hired by the organization to undertake any non-malicious hacking for comparative secret fraud. For example, आपका IT wing इसने कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया, उन्होंने कहा कि सर ये ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है? सो आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से किसी हैकर को बुलाते हो और उसको दे देते हो कि आप उसको ब्रीच करके दिखाओ, and then the person tries to find out the security loophole. Such a man is called as a white hat hacker. So I hope you should be able to understand the terms. Okay, blue hat hacker. The term blue hat was for the first time used by a company called as Microsoft. The company invited security professionals who hacked into Windows for finding out its vulnerability. Blue hat generally refers to an outside computer security consulting firm. ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम ही होता है कि वो दुनिया के जितने बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, जितने बड़े बड़े कंप्यूटर कंपनीज हैं, उनको वो हैकिंग करते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं. Means if they are able to hack, then there is a security flaw. So these are the different types of hacker and hacking. Any doubt? No. No. So let's proceed into protection. How would you protect the computer from the malware, from the hacking? First of all, you may require an antivirus software. So what is the full form of virus? Anyone? Vital, इतने समय लगले चढ़ी बनी. Vital information resource under siege. So as the name suggests here,
The name suggests here that this malware is going to affect directly to the computer hardware or software. So for that you need an utility, which is, acha, what do you mean by utility software? Utility software hochi sei software jota computer bhitere konosi gote particular task, konosi gote particular kamo ko perform karibaku chesta kare. That's called utility software. Anyway, so now viruses, antivirus ର କାମ ହଉଛି they carry a process called as computer scan, disk scan, ସେଥିରେ ଥିବା virus program ଗୁଡାକୁ identify କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ remove କରିଦିଅନ୍ତି. How do they work? कैसे काम करते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में एक built-in स्कैनर होता है. मैंने कहा था आपको कि वायरस का कुछ एक्सटेंशन होता है, जैसे can you give me some common extensions of virus through which viruses execute themselves? Viruses कौन-कौन से? Hello? Hello? Yes, sir. हाँ, what are the extensions? Virus extensions क्या है? Viruses can be found in the form of .exe, .bat or .com, etc. तो ये क्या करता है? हाँ? Sir, HTML. HTML, hypertext markup language? No, it's a language. Okay, that can be a bug. There can be a virus introduced, but if it is HTML, it will be experiencing itself in the form of .com or anything like that. तो जो भी हो, इसका काम है उस तरह के एक्सटेंशन को ढूंढना. दैट इज द वर्क ऑफ द स्कैनर. वो सारे फाइल को स्कैन करता है एंड लुक्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोड. जो कोड वो ढूंढता है उससे पहले से ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द वायरस सिग्नेचर. वायरस सिग्नेचर मतलब फॉर एग्जांपल A, B, C आर 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस. उनका जो सिग्नेचर होता है, जब तक उसको आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में लोड नहीं करोगे तब तक वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा. वेल, फॉर दिस पर्पसेस आपको अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बार बार अपडेट करना पड़ता है. सो टुडे द मॉडर्न एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैव अ फीचर कॉल्ड एज ऑटो अपडेट. गोटे पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे वो क्या करते हैं, अपने आप को खुद ही अपडेट कर देते हैं ओवर इंटरनेट. तो वो क्या करते हैं, जो भी नए सिग्नेचर्स हैं, नए फाइल्स हैं ऑफ द न्यू वायरस डेफिनेशंस, they download that and they auto complete the software. So result is that you can have a always all round protection. जिस वायरस को कंप्यूटर रिजॉल्व नहीं कर पाता, फॉर एग्जाम्पल एक नया तरह का वायरस आया हुआ है, A to Z 26 तरह के डेफिनेशंस आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में है. अभी तुम्हें मिल रहा है 27 टाइप Z1, तुम्हें पता नहीं था कि ये क्या है. Now in this case the antivirus software have a feature called as quarantine, QUARANTINE. अभी जो कोरोना एपिडेमिक के बाद सब हर किसी को ये क्वारंटाइन शब्द एटलीस्ट पता चल गया है. व्हाट इज क्वारंटाइन? What is quarantine? Keeping yourself separated. You restrict the person to avoid infection. In the same manner, agar the antivirus software is not able to resolve it, it will put into a folder called as quarantine folder. उसको quarantine कर लेता है, and then at the back end, this quarantine items are transferred to the antivirus software manufacturing company जिसका भी तुमने लिया है. So now what are the common popular antivirus software? Symantec, उसका एक product है Norton, McAfee, Avira, Quickheal, AVG, K7, Kaspersky, etc. And I use ESET. These are the different types of antivirus softwares which are available. Now another technology that can help protection is called as cryptography. What is cryptography? The root word of cryptography is crypt. Crypt mane to hide. Crypt mane hide. Okay. So cryptography is a technique जहां पे messages को छुपाया जाता है. अगर आप चाहो तो आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं उसको आप क्रिप्टोग्राफाइज कर सकते हो. For that you have to make them private. So in this way the data will be converted into a new text, a new type of data.
फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक वर्ड है, हाँ, तो वर्ड डॉक्यूमेंट है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर अ बेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर तुम उसको एनक्रिप्ट करते हो, आई एम अ बॉय, वो उसको एनक्रिप्ट करके कुछ जम्बल्ड वर्ड दिखा देगा जिसका की मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आएगा। दिस इज एन एनक्रिप्टेड फाइल। तो इन ऑर्डर टू हैव एन एनक्रिप्शन आपको एक कोड चाहिए। इस कोड को हम कहते हैं साइफर, CIPHER, साइफर। तो साइफर हैज द वर्क, इट इज अ काइंड ऑफ एल्गोरिदम, क्लियर, जो कि एनक्रिप्शन करता है, मतलब ओपन डेटा को वो हिडन डेटा में कन्वर्ट करता है एंड द रिवर्स, हिडन डेटा को ओपन करता है। सो द process of converting available data into coded data, hidden data, is called encryption. उल्टा है decryption, encryption, decryption, राइट। तो जब हम एल्गोरिदम को यूज करके आप एक प्लेन टेक्स्ट को, इंफॉर्मेशन को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। उल्टा प्रोसेस है डिसिफर और डिक्रिप्शन। एवरीबॉडी क्लियर व्हाट इज एनक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी? Yes, sir. Okay. Now, once you have understood, now here is a basic examples. This is a cipher text, okay? Enemy is nearing whatever, and then you have to use the same for the purposes, okay? This uses some logic and algorithms. So those who are very good at mathematics or mathematical reasoning, they get into the computer algorithms to create cipher techniques or cryptography techniques. Cryptography technique can be divided into three types. One is called symmetric key cryptography. Second is asymmetric key cryptography. Third is hash function cryptography. Let's understand. Symmetric key cryptography is done using a single key. For example, the same key is used for encryption or decryption. मतलब सिर्फ एक की रहता है, जो कि की मतलब क्या, एनी एक्सेस। तुम पाखे गोटे साइफर मेल आसिकी पहुंचला, आपके पास एक साइफर मेल पहुंचा, आपको उसको खोलना है, पढ़ना है, तो यू नीड सर्टेन एक्सेस की। तो वो की डालने से वो तुम्हें दिख जाएगा, वही की डालने से वो फिर से एनक्रिप्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंगल की, सिमेट्रिक की, सीक्रेट की cryptography. Now, in this way, you can share private data. But if you cipher or create single key cryptography like that, then there would be a problem also, because the criminals may operate. That is why we use also asymmetric key or public key cryptography. यहाँ पे दो की रहता है, मैं एक की को यूज करके तुम्हारे पास मेल भेजूंगा, तुम्हें और एक की डालकर उस मैसेज को पढ़ना है। तो जब तक तुम अपने साइड का की नहीं डालोगे, तुम्हें मैसेज दिखेगा नहीं। टू गिव अ कॉमन एग्जांपल, कभी आपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है? और कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट वो लॉक्ड होते हैं, कहते बड़े लॉक है थी पीडीएफ डॉक्यूमेंट देखी चो? यस सर। सो क्या होता है फिर, हाउ डू यू अनलॉक इट, कैसे खोलते हो? सर पासवर्ड, हाँ, व्हाट यू से एज अ पासवर्ड, जो तुम पासवर्ड कहते हो, दैट इज मोर ओवर अ की। आर यू क्लियर? तो ये जो की है पब्लिक की, जिससे कि ये एनक्रिप्ट हुआ है, वो सॉरी जो प्राइवेट की जिसके कि मैंने उसको एनक्रिप्ट किया है, और एक की तुम्हें मैं पास, जब तुम वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट खरीदोगे तो you will want to access it, so then you will request me, I will collect some payment, and then I will tell you, okay, use this key for opening it out, and that will open up. So this is called as asymmetric key cryptography. There could be hash function cryptography also. In hash function cryptography, it's a technique where hash value is calculated as per the message content using the hashing function. This technique does an integrity check on encrypted data.
ये एक्चुअली हाई एंड डेटा ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, मिलिट्री यूज। तो यहाँ पे वो क्या करता है, जो भी तुम्हें मैसेजेस पहुंच रहा है एनक्रिप्टेड होके, क्या वो सही है, इसको एक बार चेक करने के बाद तुम्हारे पास वो खोलने को इट इज रेडी। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का अभी का एक कॉमन यूज है डिजिटल सिग्नेचर। व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर? जैसे हम एक डॉक्यूमेंट देते थे पहले, फिजिकल डॉक्यूमेंट, पेपर डॉक्यूमेंट, उसके नीचे हम अपना सील देते थे, सिग्नेचर देते थे। मिस्टर एबीसी, मैंने सिग्नेचर डाला, सील मारा, सो दैट प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेपर डॉक्यूमेंट। बट टुडे डॉक्यूमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। डॉक्यूमेंट जो भी हम आप पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, जैसे तुम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, बड़े बड़े लिखे नहीं, उससे पहले क्या लिखता है, बिफोर यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, यू गेट अ पॉपअप, वहां पे क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है, क्या कहते हैं उससे? हम्म, नो आइडिया। ओके, वेल, दिस इज कॉल्ड एज अ टर्म्स एंड कंडीशन, और यूला, EULA, एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट। तुम्हें लिखा रहता है कि बाय क्लिकिंग नेक्स्ट and tick marking this window, you agree to our terms and condition. तो ये एक agreement है. By installing the software, you are creating an agreement with the computer software manufacturing company by clicking a key. गोटिए बटन को प्रेस करिके तुम्हें सेठी तांको सहित गोटे agreement तैयारी कर दउछ. So now this is a digital document. एंड टुमारो यू कांट से कि नहीं, मैंने क्लिक नहीं किया था, मैंने नहीं समझा था, मैंने नहीं पढ़ा था। ये सारे आईटी एक्ट 2000 के बाद, दीज आर नॉट एक्सक्यूजेस। तुमने अगर क्लिक किया है मतलब तुमने इंस्टॉल किया है, जानबूझकर इंस्टॉल किया है, सो आप उसको मना नहीं कर सकते। सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग टुडे सच टाइप ऑफ new and newer type of documents, digital signature, and they play a very important role in the entire set of electronic documents, we have to be extra careful. That is why we use digital signatures. It is a public key cryptography technique which uses an algorithm using two different mathematically related keys. One for creating a digital signature, another is for deciphering a digital signature. तो ये क्या हुआ? तो मैं तुम्हारे नाम से किसी को मेल नहीं दे सकता, अगर देता भी हूं उसका ऑथेंटिसिटी चेक हो जाता है। कभी कभार लोग फॉल्स आईडी क्रिएट करते हैं, ओके, दे ट्राई टू इम्पर्सनेट द डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। वैसा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया है एंड आपके कंप्यूटर से कोई मेल जनरेट हो रहा है, यू कैन नॉट से टुमारो कि मैंने उसे नहीं लिखा था, क्योंकि उसके साथ उसका डिजिटल सिग्नेचर एम्बेडेड होके रहता है। Even after years and years, one can trace out and find out where, in which computer, in whose computer this program, this document originated, because there will be a signature associated with that. That is why computer generated bills, computer generated documents, they do not require any physical signature. वहां पे सिग्नेचर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अपने कंप्यूटर से, हाँ, फॉर दैट व्हेन आई से अपने कंप्यूटर, मतलब आई शुड हैव अ नॉन पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, और मेरा खुद का कंप्यूटर होना चाहिए, चोरी का कंप्यूटर होना नहीं चाहिए। अगर मैंने अपने कंप्यूटर से कुछ भी डॉक्यूमेंट जनरेट किया है, दैट इज फ्रॉम माय कंप्यूटर, इट इज डिजिटली साइंड, automatically it is digital signed, anyone can trace out and find it out, okay, with a little bit of computer knowledge. Next comes the concept of digital certification. What is digital certification? It's a certificate that binds the public key with the distinguished name or DN details. For example, the name, email ID, organization, unit, locality, state, for establishing the entity's authenticity. Clear? तो अगर मैंने, just to give an example, एक डिजिटल सिग्नेचर
मेरे कंपनी से ओरिजिन किया और मेरे कंपनी में 5 सिस्टम है, 5 सिस्टम में 5 लोग काम करते हैं, लेकिन सारा का सारा दिखाएगा कि एक ही सिस्टम से निकल रहा है। सो बाय डीएन सिस्टम और डिस्टिंग्विश्ड नेम सिस्टम, जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो उसको एक ईमेल आईडी के साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब आपके ऑफिस में अगर 5 लोग हैं, पांचों का एक एक अलग अलग नाम, ईमेल आईडी, ये सब रहेगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि कौन उसका एक्चुअल ओनर है। सो दिस इज डीएन सिस्टम, otherwise called as digital certification system. Everybody has understood what is DN and what is digital certification? You should get a basic Yes, idea. sir. Huh. Still, if you get any doubts at any point of time, you can always ask. Now coming to the next protection system, security system, which is otherwise called as the firewall system. What is a firewall? Now firewall can be a hardware or can be a software. अभी आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आजकल तो लोग वेब एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, लेकिन सपोज आप क्या करते हो, एक पेन ड्राइव में या फिर एक सीडी में या फिर डीवीडी में आपने सॉफ्टवेयर लिया था। आप अपने पेन ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर लेके आए हो और उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो मेरे कंप्यूटर में विदाउट माई व्हाट अप्रूवल, then I can check it by a firewall. A firewall is either a hardware or it is a software, जो कि unauthorized access to the computer network को prevent करता है। And firewalls are very much commonly used in government networks, in banks, in defense, in military, in police, because जो भी डेटा जाएगा वो हमेशा फायरवॉल के थ्रू ही जाएगा। So in this way, it creates an inbound and outbound packet. And वहीं पे इसको परमिट किया जाता है कि वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे कि बहुत से इंजीनियर्स क्या करते हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं, they will be working in A company, और A कंपनी में बैठे बैठे they will be applying for B कंपनी। मतलब अगर वो TCS में काम कर रहे हैं, TCS का कंप्यूटर यूज करके वो अपना रिज्यूम लिखेंगे, दे विल अप्लाई फॉर अ जॉब टू वर्क इन इन्फोसिस। जैसे कि कोई कंपनी में फायरवॉल है नहीं, सो ऑल द मेल्स दे राइट दैट गेट फिल्टर्ड। अगर तुम उस तरह का कुछ मेल लिखोगे वो वहां पे जाके फायरवॉल में रुक जाएगा, फिर इट विल बी गेटिंग सेंट टू द कंसर्न कम्युनिकेशन मैनेजर। द कम्युनिकेशन मैनेजर विल लुक इनटू दैट और पता चल जाएगा ये बंदा हमारी कंपनी से सैलरी ले रहा है लेकिन दूसरे कंपनी के लिए ट्राई कर रहा है। वो एचआर को वो फॉरवर्ड कर देगा। द एचआर एग्जीक्यूटिव विल गेट टू नो अबाउट इट एंड देन ही विल कॉल यू फॉर अ मीटिंग। अगर उनको आपका एटीट्यूड ठीक लगा तो रखेंगे, वरना निकाल देंगे। सो इन दिस वे फायरवॉल कैन बी अ प्रोटेक्शन. Most of the times, computer networks use firewalls, which are basically hardware firewalls. I'm showing you a picture of right now. ये जो तुम्हें firewall दिख रहा है, this is a hardware firewall. बड़े बड़े मेन फ्रेम पीसीज में ये firewall तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसमें जितने भी पोर्ट हैं, you can see this is a spam firewall. Spamming. What is spamming? Do you remember spamming? Forgot what is spamming. Spamming is hitting the computer network with many unnecessary mails. जो मेल तुम्हें नहीं चाहिए, जो डेटा तुम्हें नहीं चाहिए, उस डेटा को हिट करना, ओके, उसको स्पैमिंग कहते हैं। तो अगर तुम्हारा एक कंप्यूटर नेटवर्क है और उसमें लोग लॉजिकली प्रोग्राम करके बहुत सारे प्रोग्राम हिट कर रहे हैं, बहुत सारे मेल हिट कर रहे हैं, तुम्हारा सर्वर प्लेस चला जाएगा। because you have allocated everyone suppose like 2 GB of mail space और उसमें आकर 1.5 GB spam भर जाएगा, तो how will he work, how will he do the work? That's why you need a spam firewall. So this is a firewall that will restrict that data, वो filter करेगा and it will not allow it to come to you. Most of the times the hardware firewalls work in this manner.
For each packet of data, the firewall compares known component of the packet with a security rule and decides कौन सा पैकेट अंदर आना चाहिए, कौन सा पैकेट बाहर जाना चाहिए. So this is like a prahari sitting at the network, allowing and not allowing. Now, software firewall are built up in the computer. कभी कभार तुम जब इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, एरर मैसेज देता है that your firewall is preventing the access to this site. मतलब जो firewall programming है, that is not allowing it to access. Why firewall is important? It's very important. अगर आपका firewall नहीं रहेगा तो it is very easy to infect your computer. It provides protection against unwanted traffic. जो मेल, जो कम्युनिकेशन तुम नहीं चाहते हो. Hide vulnerable systems. Now सारे systems के security features same नहीं होते. जैसे तुम्हारे पास एक सिस्टम है विंडोज एक्सपी में, दूसरा सिस्टम है विंडोज विस्ता, तीसरा है विंडोज 8 एंड फोर्थ इज विंडोज 10. सो ये चार जो मैंने विंडोज के वर्जन कहा, मुझे बताओ सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा है? iOS. नहीं, मैं जो चार्टा कहली, I told Windows 10. Okay, so it would be the most secure. Now you cannot say that Windows XP का security feature और Windows 10 का security feature same है. तुम कहोगे सर तो फिर क्या हुआ, हम ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देंगे, we'll have a secure operating system. Well, for that your hardware must permit. So in this way कुछ systems होते हैं which are vulnerable in every company, corporate. तो उसको बचाने के लिए भी firewall को use किया जाता है. Third, it is used to log traffic to and from a private network. अगर तुम किसी private network में घुस रहे हो, what do you mean by a private network? A network which is like belongs to some person. Example, it happened once only in my life. I was just browsing and searching for something. Unknowingly, I discovered I was in the blog room of Pakistan Army. Do you believe it? मैं पाकिस्तान आर्मी के ब्लॉग रूम में घुस गया था, मतलब ऑफिशियल ब्लॉग, and they were all chatting at that point of time. There was a Christian school. उस क्रिश्चियन स्कूल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, बहुत से बच्चे मर गए थे. They were discussing on that topic. I got to see their discussions, what they're discussing. अब my question is कि मैं वहां पे पहुंचा कैसे? मैं इसलिए पहुंच गया because the firewall did not protect it. कभी कभार जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहोगे, वो दिखा देगा this server doesn't allow, you are not authenticated to access this server. कभी आपने इस तरह का मैसेज देखा है? नो. Yes, sir. हाँ, जो अगर आप इस तरह का मैसेजेस पा रहे हो, मतलब सामने वाले ने फायरवॉल ब्लॉकिंग किया है उससे. नाउ प्रॉब्लम क्या है? सी, यू गो टू दैट वेबसाइट, आप किसी के प्राइवेट नेटवर्क में घुस गए. फॉर एग्जांपल, जाते जाते आपने क्या किया, विप्रो के नेटवर्क में आप घुस गए और आपको कुछ अच्छा लगा, आपने वहां से कॉपी कर लिया एंड इट केम टू यू. फिर विप्रो आपको एक बड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन केस में डाल देगा. सो यू आर गोइंग टू फेस फाइनेंशियल लॉसेस. सो इन दिस वे it checks private network access. It directs the incoming traffic to more trustworthy internal systems. जब कोई ट्रैफिक आ रहा है, वो उसे उस कंप्यूटर के पास लेने की कोशिश करता है जो कि लाइक ऑथेंटिक हो, जिसका फायरवॉल मैकेनिज्म. टाइप्स ऑफ फायरवॉल. Firewalls can be implemented using one of the three primary architecture: packet filtering, application level gateway, circuit level gateway. Packet filtering is the most basic firewall technique. इसमें क्या होता है? It operates at the network layer. जो डेटार पैकेट बाहर को जाउची किंबा डेटार पैकेट भितर को आसुची, ता ऊपर से किछटा फिक्स्ड रूल अप्लाई करे, and then it determines कि
I should allow this or not. To give an example, you might have seen that now we have different types of applications which do not open beyond the people of certain age. जैसे कि कुछ websites रहेंगे वो बच्चों के लिए खुलेंगे नहीं. This is moreover because you are filtering. If you are filtering at the network level or you are filtering at an application level. So in an application level, there are some programs called as proxy. ये common term है, proxy detection error, proxy error detection. कभी-कभार कंप्यूटर में दिखाता है. These server level programs are called as proxy, which run the firewall. This supports the functions जैसे कि authentication and logging. तो अगर आप उस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा. दिस इज अ फायरवॉल. अगर आप गलत पासवर्ड देते हो अलाउ नहीं करेगा. सो दिस इज एप्लीकेशन लेवल. Circuit level gateway are not so commonly found, but yes, they can be found also. यहाँ पे all the connections are monitored. मतलब जो तरीके से आप कंप्यूटर के रिसोर्सेस को एक्सेस करोगे या वहां से निकलने की कोशिश करोगे, दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है. It is inbuilt into a hardware mostly. Another method of protection of data is called as backup and recovery. Backup मतलब डेटा को स्टोर करना, डुप्लीकेट कॉपी बनाना, हार्ड ड्राइव बैकअप्स, डिस्क बैकअप्स, सीडी डीवीडी बैकअप, पेन ड्राइव बैकअप, ये सारे बैकअप टेक्निक है. हर बैकअप टेक्निक के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं. जैसे सीडी, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सीडी? सीडी रे कितने एमबी रो डेटा रही परिवो? So 200 MB to 500. A CD mostly contains how much of data? It contains 700 MB of data. If it is a small CD, then it contains 200 MB, 180 MB to 200 MB. A DVD will contain 4 point, how much of data? DVD, standard DVD. It contains around 4.2 GB of data. तो ये अच्छे स्टोरेज मीडियम है लेकिन स्पेस कंज्यूम करते हैं. मैग्नेटिक डिस्क अच्छा है बट इट इज एक्सपेंसिव. पेन ड्राइव सस्ता है लेकिन बहुत जल्दी उसमें से डेटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं if it is exposed to any magnetic environment, sorry, any high ultraviolet ray environment. So these are the problems. However, backup method क्या है? Full backup. पूरा कंप्लीट हार्ड ड्राइव को, डेटा को आप उसका एक कॉपी बना देते हो. डिफरेंशियल बैकअप, लेट्स अंडरस्टैंड. फुल बैकअप, इसमें क्या करते हैं, फाइल को पूरा का पूरा फाइल सिस्टम को कॉपी किया जाता है ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस. अगर आप बैकअप सही तरीके से नहीं लोगे, यू विल बी इन डीप ट्रबल. आई फेस्ड वन सच ट्रबल. प्रीवियसली आई वाज नॉट सो केयरफुल रिगार्डिंग क्रिएटिंग बैकअप्स. पहले आई डिडंट केयर, मतलब आई वाज रादर टू बिजी आई विल से. तो एक बार मेरे बहुत से डेटा लॉस हुए, फिर मुझे उसको डेटा को रिकवर करना था. कितना अमाउंट का डेटा लॉस हुआ? The loss of data was around 300 to 400 MB. तो ये जो 300-400 MB, इसमें से इसको मुझे रिकवर करना था. So I went on finding a professional. I went on who will be recovering that. मुझे एक भी नहीं मिला कटक में, एक भी नहीं मिला भुवनेश्वर में. I got a man from Hyderabad. I fixed an appointment with him. He not only visited Odisha for my hard drive, but he also visited for some other hard drives which he had to crack open. Then when he came, he checked my hard drive. क्योंकि मेरा हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया था और मैंने बैकअप नहीं लिया था. ओके, टेल मी वो कितना चार्ज करता होगा रिकवर करने के लिए? गेस मारो. कम ऑन, 1 MB डेटा निकालने के लिए कितना पैसा लेता होगा वो? So 500. He was charging me 2000.
2,500 rupees per MB, megabyte of data. And like at that point of time, I'm talking about 5 or 6 years back, I had 700 MB. So I was literally about to pay 2,500 into 700 to this man for getting my files back. So I had to recalculate कि कितना बहुत ही ज़्यादा urgent है and which can be let go. So in this way I concluded no, मेरा अगर 5 से 6 MB का डेटा मिल जाए तो काम चल जाएगा. So I recovered those much only because it takes time depending upon the condition of the disk. कितना डैमेज हुआ है, कहाँ डेटा था. Data recovery is time consuming. It requires a lot of skills. He was like using all the fingers at a time when he was pressing the keys. This includes a lot of hardware skills with that. Point is here that agar aap apne backup rakhte ho, these problems are not there. Simple. You can create backups. Incremental backup method. In this method, आप क्या करते हो, जो आपने बैकअप लिया था उसको धीरे धीरे मॉडिफाई करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंप्यूटर और उसमें सी ड्राइव में जितना डेटा है, लास्ट वीक में जितना डेटा था इस वीक में तो उतना नहीं होगा ना. यू शैल ऐड समथिंग टू दैट. ओके, सो व्हेन यू आर एडिंग समथिंग टू दैट, तो वो अपने आप ही उसको अपग्रेड कर लेता है. So this is incremental data backup. Right now, most of the computers, they provide this service for free. Differential backup method is a method where all the files that have any differences, they are only backed up. मतलब पुराना फाइल और नया फाइल इसमें अलग क्या है, अगर अलग है तो वो फिल्टर करके उसको ही बैकअप में लेता है, वरना नहीं लेता. तुमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था, उस वर्ड डॉक्यूमेंट को आपने एडिट ही नहीं किया तो उसको क्या रिप्लेस करना, क्या रिप्लेस करना, तो सेम ही है. लेकिन तुमने और एक डॉक्यूमेंट खोला था, उसको आपने एडिट किया है, तो बाय डिफरेंशियल बैकअप लॉजिक इट विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड रिप्लेस दैट. Mirror backup method. Mirror backup method, otherwise called as clone backup method, is a method in which पूरे का पूरा data of the file are backed up without any compression. उसको छोटा नहीं किया जाता. And that is stored in a destination. This method is very, very useful if your computer is at high risk because of any reason. तो एक बार अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, या फिर you had any problem with the data, or your hard drive is giving some temporary problems, बार बार reboot हो रहा है, red light दे रहा है continuously, तो आपको समझो कि it's a high time you create backups. तो अगर आप उसमें mirror backup method यूज करते हो, तुम्हें reinstall करने की ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरत नहीं है. You can just put the clone and your computer would be ready within 15 minutes. Online backup. Here you use the data, store the data on internet. जैसे कि आप लोग सब WhatsApp वगैरह यूज करते होंगे, तो वहां पे वो पूछता है how do you want to create a backup. You choose it like daily backup, weekly backup, monthly backup. कभी फेस किया है आप लोगों ने? Yes, sir. तो तुमको सेटा को सिलेक्ट करियाको पड़िबो. देन यू हैव टू गिव इट अ मेल आईडी. फॉर एग्जांपल गूगल का तुमने मेल आईडी दिया, उसका एक स्पेस रहता है. हाउ मच ऑफ फ्री स्पेस गूगल प्रोवाइड्स पर ईमेल आईडी? You people are not techno savvy. You are not at all techno savvy. તમે બસ ખાલી से WhatsApp और Facebook કરছো, આ કિચ્છી કરો. Anyway, generally for last few years Google has been providing 2 GB of data for free email accounts. So you can store up to 2 GB. Later on, very recently, this was increased to 24 GB. Now it is providing 24 GB of data across the Gmail IDs. So aap with the premium members, actually not to all, with the people who go for premium membership or those who have been using this ID for a long time. Anyway, so in this way, you are going to store the data. So this is internet-based backup.
अगर आपने बैकअप नहीं किया तो डेटा को फिर से लेकर आना, उसे हम कहते हैं रिकवरी। तो देयर आर सम टूल्स जैसे कि ESFs, रिकवरी विजार्ड, PC इंस्पेक्टर फाइल, डेटा रिकवरी, वर्चुअल लैब। भारत में ये जो डेटा रिकवरी विजार्ड, वर्चुअल लैब, ये ज्यादा यूज किया जाता है, उससे डेटा को फिर से वापस लाते हैं। नाउ कमिंग टू another way of computer security is user identification and authentication. The name is explanatory. यहाँ पे यूजर को पहचानना पड़ता है कि कौन है, is he the right man? The most general way of user identification is by username and password. તમે username और password, it is highly personal to you. इसके साथ आपका authenticity check किया जाता है. A password is a secret word with a string of characters, and for the purposes of non-hackability, passwords are a combination of alphanumeric and symbolic. एथरे किछटा अल्फाबेट्स थाय, किछटा नंबर थाय, किछटा सिंबल थाय, आको कंबाइन करके पासवर्ड को डिजाइन करा जाए. पासवर्ड को when you put it into that, you get an access to the computer. Well, this is a technique. Now, a good password should have at least 6 to 8 characters. It should be a mixture of uppercase letter, lowercase letter, punctuation symbols, etc. Never select a password in the name of family members, date of birth, simple sequences like ABCDEF or 1 2 3 4 5 6. ये सारे password को कहते हैं weak password, which can be easily cracked. Try to set up difficult password, but the problem is that with so many programs and websites, memberships, the number of passwords is also increasing. Now it is very difficult to remember the passwords. So many passwords. So Google is trying to help you. So if somebody is hacking Google at your window, he or she can obtain your passwords. So be careful about which password to store in Google server and which not to. Okay? You cannot really trust a company will not be breached. Coming to the next part, change of password. कुछ दिनों में password को बदल देना. Not sharing with them, with the friends, family members. Now, Ministry of Information is making it popular, so everybody almost knows a little bit about it. Okay. Next is biometrics. What is biometric? Biometric technique is a technique which you authenticate a person's identity by the fingerprint, by the retina pattern, by the behavioral aptitude like voice pattern, handwritten signature. इससे लोगों को पहचाना जाता है कि वो कौन है. ओके, जैसे कि इन द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पहले सिग्नेचर मैचिंग किया जाता था. हैव यू एवर फेस्ड सिग्नेचर मैचिंग इन अ बैंक? जब आप चेक मतलब एक्सेस करना चाहते हो, चेकबुक लेना चाहते हो, तो सिग्नेचर मैचिंग कभी आपने दिया है? Yes, sir. How is it being done? That would be a man, a kind of clerk or maybe a probationary officer. वो क्या करता रहेगा ना, आप जो दो सिग्नेचर दोगे उसको पेरेंटल सिग्नेचर के साथ मैच करता है. अब प्रॉब्लम ये होती है, फॉर एग्जांपल अभिषेक, तुमने क्या किया, एक सिग्नेचर बैंक में दिया और तुम ट्रांजैक्ट करते आ रहे हो, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया. अब 4 साल के बाद तुम्हारा सिग्नेचर भी बदल जाता है. So when you go to the bank and try to give the signature, अब signature match नहीं करेगा. Then the clerk will say, sir आपका तो मैच नहीं कर रहा है, अब याद कीजिए क्या किया था. अब मुझे कैसे याद रहेगा मैं 3 साल पहले एक आफ्टरनून में आकर यहाँ पे कौन सा सिग्नेचर किया था? How used to be my signature then? I may have a memory loss. So to avoid this, biometrics is used. तो हर किसी का सिग्नेचर करने का एक पैटर्न होता है. वो पेन को कैसे पकड़ता है, कितने फोर्स से कहां पे रन करता है, कहां पे ट्विस्ट देता है. तो अगर वो पैटर्न मैच कर जाता है तब भी ये अप्रूव कर लेता है कि वो ही इज द राइट मैन. Biometric systems are very much in use today. You find they're allowing security.
even if like computers right now, laptops are biometrics. आपके मोबाइल फोन के पीछे भी बायोमेट्रिक है, आपका फिंगरप्रिंट दोगे तभी जाकर मोबाइल फोन खुलता है. So that is biometric system. Access control is another technique. What is this? It restricts different classes of users to subset the information that they can only access data and services for which they have been authorized. मतलब अगर तुम्हें नेटवर्क यूज करने के लिए दिया गया है कि तुम नेटवर्क में ब्राउज कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते, फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, प्ले नहीं कर सकते, अननेसेसरी मेल्स, पर्सनल मेल नहीं भेज सकते. दिस इज ऑल्सो अ सिक्योरिटी फीचर. बहुत से कंपनीज हैं which are providing this kind of services to the government, private organizations. तो वो इसको लिमिट करते हैं. तुम लंबा ईमेल लिख नहीं सकते, तुम जो भी रेस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते, तुम ऑफिस के दौरान तुम इंटरनेट में मूवी देख नहीं सकते. सो दीज आर एक्सेस कंट्रोल which is a feature of security. और ये बहुत जरूरी है in a country like India and especially with a culture like work from home. आज के समय में जो लोग वर्क फ्रॉम होम में हैं, they are really very very unhappy about working from home. पता है क्यों? The reason is so that many of the employers are really pressurizing their people, and there is a reason that many employees are not continuously working. अब ऑफिस में तो काम नहीं करते थे, what to do at home? ऑफिस में जाएंगे, लॉग इन कर देंगे, then they will start to open Amazon and see what is the new sari coming up. Now you are taking salary, man, you are taking money from the employer to work at that point of time, but then you don't do. So this is like violation of the profits. So this is requires access control. So in this way, this access control now is programmed, जैसे कि पेन ड्राइव को प्रोग्राम किया जाता है. पेन ड्राइव के पास अगर तुम्हारे पास पासवर्ड है तभी जाकर वो पेन ड्राइव खुलेगा. CD, DVD, memory sticks, you can have access control. So we have learned what is antivirus, we learned what is masquerading, we learned what is password, what is a spam mail, what is cyber stalking. These are some new concepts. जो new है वही मैं discuss करूंगा. First one is brute force. Brute force में how shall I explain in a easy language? देखो, तुम्हारे पास एक पासवर्ड है, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या पासवर्ड दिया है, तो ब्रूट फोर्स एक लॉजिक है, इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. तो मैं क्या करूंगा, वो सॉफ्टवेयर जब रन करता हूं तो जितने भी पॉसिबल पासवर्ड्स हैं वो उसको स्कैन करेगा, and depending upon the combination of the passwords and the letters, it will show you the password to crack the password. Sci-fi movie में आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा कभी. साइबर स्टॉकिंग, दिस इज अ क्राइम. लोग क्या करते हैं, इंटरनेट में लोगों को फॉलो करते हैं. नॉट ओनली दैट, दे फॉलो इंडिविजुअल, दे फॉलो ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन टू नो व्हाट दे आर डूइंग. और इसमें कुछ हद तक लोग भी रिस्पॉन्सिबल है. तुझे पता है आज मैं आइनॉक्स जा रही हूँ मूवी देखने, ये मेरा टिकट है, मेरा फोटोग्राफ है. Why you have to upload it in the Facebook कि तुम जा रहे हो? So if there would be a guy who will be running after you, who want to seduce you or whatever, he will chase you. उसे पता चल गया कि आप वहां पे हो. You are making this information open. Don't do that. तुम क्या खा रहे हो, क्या तुम्हें खाना पसंद है, etc 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 and things. The person who will be a criminal will be designing a complete crime to do it. So this are people who are called a cyber stalker. Cyber stalker क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पैचेस में कलेक्ट करते हैं, फिर उस पैचेस को जोड़ देते हैं. जोड़ने के बाद उनको मिल जाता है योर एंटायर पर्सनालिटी. वो पर्सनालिटी बनाते हैं. They can know everything, like what kind of dress you like, what kind of, and this data is being collected by algorithms. Data diddling, this is changing the data before entry into a computer system. मॉडिफाई करके डेटा को
insert karna. This is a security technique actually. Denial of the DOS attack, spoofing patches. Patches is a piece of software designed to fix a problem. जैसे antivirus patch. Then hackbot. It is a bot, मतलब robot, which scans the vulnerability. Logic bomb, I have already told you. Domain hijacking, told you. Hashing, told you. Honeypot. Honeypot are decoy or a person, device or event to put a network at a bait to lure off attackers. ये जो most common honeypots are this gamblings. Okay, Rummy खेलो online 1,50,000 जीतो. People fall into the trap. So they combine people, they combine devices, event, और लोगों को आकर फंसा देते हैं. This is called honeypot. Similarly, domain hijacking, I have already told you. Phishing, already I have told you. So that ends the chapter on computer malware and security flaws. So you go through it at any point of time. Even if you come across any other doubt, you can always ask me. So have you understood the chapter? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then have a good time all. Good